नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। नमस्कारः। सुप्रभातं गुरुवर्य। सुप्रभातं सर्वेभ्यो। आरम्भं कुर्मः। आदौ सत्य महोदयः स्वविचारं प्रकटयति। आं महोदय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। भगवान् इतः पर्यन्तम् अर्जुनं समस्त ज्ञानोपदेशान् कृत्वा एतस्य दिव्य बोधनस्य उपसंहारणं कर्तुं निश्चयितवान्। सन्यासं त्यागम् एतयोः द्वयोः व्यत्यासयोः मौलिकस्वरूपं ज्ञातुम् इच्छामि इति अर्जुनस्य प्रश्नः आसीत्। भगवान् तस्य दिव्यज्ञान उपदेशं त्रीणि विभागान् कृत्वा अर्जुनं बोधितवान्। प्रथमभागे कर्मयोगस्य बोधनं, द्वितीयभागे भक्तियोगस्य ज्ञानं, तृतीयभागे ज्ञानयोगस्य विषयेषु अतीव विस्तारेण विशेषज्ञानम् अर्जुनाय अथवा अस्मभ्यं प्रसादितवान्। 18 अध्यायस्य आरम्भे अर्जुनस्य प्रतिपादित प्रश्नस्य विषये अस्माकं कृते द्वौ सन्देहौ जनयतः। प्रथमम्, एतस्य सर्वस्य ज्ञानं प्राप्त्वा किं कारणेन अर्जुनः पुनः सन्यासस्य त्यागस्य च विषये प्रश्नं कृतवान्। द्वितीयं, किं कारणेन अर्जुनः भगवन्तं त्रिभिः नामैः सम्बोधितवान्। 17 अध्यायस्य अन्ते भगवान् अश्रद्धया यज्ञदानादि कर्माणि सर्वदा असत् उच्यते इति उक्तवान्। भगवान् समान अध्याये एव श्रद्धया कृतानि कर्माणां फलितानि अपि विशदीकृतवान्। सात्विक श्रद्धया कृतानि कर्माणि संपूर्ण फलितानि ददाति। राजसिक श्रद्धया कृतानि कर्माणि लौकिक फलितानि ददाति। अन्ते तामसिक श्रद्धया कृतानि कर्माणि अधम फलितानि ददाति। सादृश प्रकारेण अश्रद्धया सादृश प्रकारेण अश्रद्धया कृतानि कर्माणि न इहलोके फलं ददाति नापि परलोके ददाति। एतानि सर्वाणि क्रियासम्बन्धित फलितानि खलु। एतत् सन्देशं श्रुत्वा अर्जुनस्य मनसि एकं सन्देहम् अजनयत्। यदि कोऽपि किमपि कर्म न करोति चेत् तत् कार्यं सन्यासम् उच्यते वा अथवा त्यागम् उच्यते वा? सम्पूर्ण क्रिया विसर्जनं सन्यासं वा अथवा त्यागं वा? अर्जुनः एतयोः द्वयोः विषययोः व्यत्यासं ज्ञातुम् इच्छतिवान्। अनन्तरं भगवत् शरणागतिम् एव सर्वाणां कृते इन्द्रिय नियन्त्रणं कर्तुं साधनम् इति ज्ञात्वा भगवन्तं महाबाहो ऋषिकेश केशि एतैः नामैः सह सम्बोधितवान्। महाबाहो इत्युक्ते तस्य महाबाहुभिः सह लौकिक अवरोधान् निरोधितवान्। ऋषिकेशः इत्युक्ते इन्द्रियाणाम् अधिपतिः। केशि इत्युक्ते अस्माकं मनसि राक्षस प्रवृत्तीनां संहारं करोति। भौतिक लौकिक फल मुद्दिश्य कर्माणां परित्यागं सन्यासं भवति। भौतिक लौकिक फल मुद्दिश्य कर्माणां परित्यागं सन्यासं भवति। किन्तु त्यागिनः शास्त्रविहित कर्माणि कदापि न त्यजयन्ति। ते नित्य नैमित्तिक कर्माणि कुर्वन्तः तेषां फलत्यागं कुर्वन्ति। भगवान् त्यागस्य अपि गुणानुसारेण त्रीणि विभागान् कृतवान्। अस्माकं विहित शास्त्र कर्माणि वयं कदापि न त्यजनीयम्। शास्त्र विहित कर्माणि आश्रम धर्मानुसारेण वर्तन्ते। यदि कोऽपि गृहस्थ धर्मे स्थित्वा सन्यासस्य जीवन विधानम् अनुसरणं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् सः धर्मभ्रष्टः भवति। शास्त्र विहित कर्माणि अस्माकं कृते सत्वगुणानि वृद्धिं कर्तुं सहायं कुर्वन्ति। तेषां त्यजनं केवल तामसिक त्यागम् एव भवति।
अनानुकूल्यतया अथवा शारीरिक असौकर्य कारणेन यदि शास्त्रविहित कर्माणि त्यजन्ति चेत् तत् रजोगुण त्यागं कथ्यते। प्रायः एकदा समये सर्वजनाः यज्ञकर्माणि संध्यावन्दनादि कार्यक्रमाणि अकुर्वन्। कालक्रमेण केचन समूहाः वर्गाः च निर्देशित नैमित्तिक कर्माणि त्यजितवन्तः। भगवद्गीतायाः मुख्य उद्देश्यं कर्म प्रेरणा एव। यदा श्री आञ्जनेयः रामस्य सन्देशं सीतायै दत्तवान्, महासाध्वी सीता माता आञ्जनेयं कतिपय प्रश्नानि पृच्छतिवती। सा श्रीरामस्य कर्तव्यनिष्ठयाः परीक्षां कर्तुम् इच्छतिवान्। कच्चिन्न व्यथितो रामः काचिन परितप्यते, उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः। कच्चिन्न दीनः सम्भ्रातः, कार्येषु च न मुह्यति। कच्चित् पुरुषकार्याणि कुरुते नृप ते सुतः। रावणेन मम अपहरणानन्तरं श्रीरामः संतापेन सदा परितप्यते वा? सः क्षत्रिय धर्मानुसारेण विहित कार्येषु न मुह्यति खलु? श्रीरामचन्द्रः मम वियोग कारणेन कर्मत्यागं कर्तुं कदापि अहं न इच्छामि इति सीता माता उक्तवती। केचन जनाः यदि कस्मिन्नपि कार्ये विमुखता अस्ति चेत् ते तत् कार्यस्य त्यागं कुर्वन्ति। काशीनगरे एकं शाकम् अथवा फलं त्यागं कर्तुम् एकः सम्प्रदायः। एकः कारवेल्लं करेला न इच्छति, सः तत् शाकस्य त्यागं काशीनगरे करोति। एतानि सर्वाणि त्याग कार्याणि भवितुं न अर्हति। तत् त्यागं केवल रजोगुण त्यागम् एव। वस्तुतः सर्वकर्माणि आदरभावेन कृत्वा तेषां फल त्यागं करणीयम् एव सात्विक त्यागं भवति। ये तु कर्मफलम् अपेक्षा कर्म कुर्वन्ति ते सकामाः। तेषां कर्मफलं यदि पुण्यं तर्हि देवत्वं, यदि पुनः पापं तर्हि नारकित्वम्, अथ अभयं तर्हि मनुष्यत्वम् इति फलविभागाः। अनन्तरं भगवान् ज्ञानस्य कर्मस्य च गुणविभागानां विवरणं दत्तवान्। विद्युद्दीपे, दूरदर्शने इतर अनेक विद्युत् उपकरणेषु समान विद्युत् प्रसरणं प्रवहति। एतस्य ज्ञानं विद्युत्कारः जानाति। सादृश प्रकारेण सर्वभूतेषु परमात्मनः दर्शनं कर्तुम् एव सात्विक ज्ञानं भवति। यत् ज्ञानं सर्वेषु भूतेषु पृथक् विधान् नाना भावान् पृथक्त्वेन परमात्मनं परिग्रहन्ति, तत् ज्ञानं राजसं भवति। सकल सृष्टिः भिन्न विभागान् एव एतस्मिन् भावने सर्वदा अहैतुक रीत्या ये जीवनं यापयन्ति ते तामसिक ज्ञानजनाः भवन्ति। यत् कर्म शास्त्रसम्मतः रागद्वेषरहितः विना फलापेक्षः तत् कर्मेव सत्वगुणे स्थितः। समाप्तं महोदय। धन्यवादः। बहु उत्तमं सत्य महोदय, बहु उत्तमम्। उत्तमं सत्याजी। उत्तमं महोदय। उत्तमं महोदय। बहु उत्तमं सत्य महोदय। उत्तमम्। अति उत्तमं महोदय, अति उत्तमं महोदय। किञ्चित् समयाभावकारणेन अहं विस्तारेण न लिखितवान्। प्रायः सम्यक् इति अहं मन्ये। सम्यक् शॉर्ट एंड स्वीट। इदानीम् अग्रे गच्छामः। अग्रे तिलोत्तमा भगिनी स्वविचारं प्रकटयति। आम्, नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमः गुरुजी, नमो नमः सर्वेभ्यः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम 18वें अध्याय के 1 से 27वें श्लोक तक भाव कथन कर रहे हैं। 1 से 17वें अध्याय पर्यंतम हमने अमृतपान आदरणीय गुरुजी के रसवंती से किया है। इस श्रवण से हमारे शरीर के सारे रोम पुलकित हुए हैं।
श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का सूक्ष्म परिचय इस अभ्यास से हमें प्राप्त हुआ है। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है और अर्जुन का विषाद अपने स्वयं के लिए नहीं है, अपितु यह विषाद सामने वाले पक्ष के लिए है। अर्जुन खुद हार जाएगा, खुद मर जाएगा इसलिए नहीं, परंतु सामने वाले हार जाएंगे, मर जाएंगे इसलिए वह परेशान हो गया था और कह रहा था कि मैं इस नरसंहार के बजाय यह युद्ध भूमि छोड़कर जाता हूँ। किंतु श्री कृष्ण भगवान बार बार उसे समझाते हैं, भागो नहीं, जागो। भगवान अर्जुन की अंदर से विवेक जागृति कराते हैं। इस अध्याय में अर्जुन का प्रश्न है कि हमें संन्यास और त्याग में क्या अंतर है, यह पृथक पृथक करके बताओ। 17 अध्याय पूर्ण होने के पश्चात किया हुआ प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी चेतना जागी है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग समझाया गया है, विश्वरूप दर्शन भी पा लिया है और फिर किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही मूल्यवान है। त्याग हम समझ सकते हैं, किंतु संन्यास के बारे में जानना जरूरी है। सांख्य दर्शन में मोक्ष की तरफ बढ़ाया गया अंतिम कदम सब कुछ त्याग कर स्वयं का श्राद्ध पिंडदान करके संन्यास, संपूर्ण समर्पण। त्याग यह कर्मयोग है, कर्मफल का त्याग करना है, कर्मफल की अपेक्षा का भी त्याग करना है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का विवेक जागृत किया है, इसलिए यह प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन को युद्ध भूमि का त्याग करना था, किंतु इस अध्याय का त्याग सात्विक त्याग है। अर्जुन को अनेकानेक धन्यवाद देने चाहिए। हमारे मन में उठने वाले सारे प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किए हैं, इससे हमारा मार्ग प्रशस्त हो गया है। संसार में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति कैसी हो सकती है, इसका पूरा मार्गदर्शन हमें अर्जुन के माध्यम से प्राप्त हुआ है। गीता पढ़ो, पढ़ाओ और जीवन में लाओ, यह सूत्र का अंगीकार हमें करना है। अपने हृदय की शुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं, ऐसे यज्ञ का त्याग नहीं करना। यज्ञ, दान और तप, इन कर्मों का त्याग नहीं करना है, किंतु यह सात्विक होने आवश्यक है, इससे पवित्रता प्राप्त होती है। जन्म और मृत्यु के बीच में हमारा जीवन खड़ा है और यही बीच में कर्म स्वातंत्र हमें मिला है। इस कर्म स्वातंत्र का सही उपयोग हमें करना है। संग, आसक्ति और कर्म फल का त्याग करना है। इस काम को हमें सावधानता से करना है, अपने आप को अंदर से जगाना है, संघर्ष प्रवृत्ति का पथकर करना है, सात्विक त्याग करना है, सात्विक दान करना है, सात्विक तप करना है। आम खाना हो तो गुठली और छिलका फेंकना है, आसक्ति की गुठली और संग का छिलका फेंक देना ही पड़ता है। हम विशुद्ध आत्मा है, यह समझ में आए तो अहंकार पास नहीं आता। वृथा अभिमान छोड़ देना है, हम निमित्त कारण है, यह समझ में लाना है। अधिष्ठान, कर्ता, करण, पृथक चेष्टा और दैवम, इसी पर कर्म अधिष्ठित है, किंतु हमारे मन में जो क्रिया चल रही है, इस विषय का अभ्यास सिर्फ भारतीय तत्वज्ञान में हुआ है। जो मन में चलता है वही बाहर प्रकट होता है। हमें कर्ता से अकर्ता बनना है, संग रहित बनना है। इस प्रकार से भगवान ने हमें समता का भाव उत्पन्न करने की विधि बताई है। सूर्य कभी अंधेरों को खोज सकता है, हम अपनी छाया को कभी आलिंगन दे सकते हैं, इसलिए हमें सूर्य की भांति प्रकाशमान बनना है और यह सात्विक कार्य गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं। इससे हमारा जीवन सुवर्णमय हो रहा है। इस छोटे से जीवन का सदुपयोग करने की विधि हमें प्राप्त हुई है। इसे जीवन में उतार कर हमारा और हमारे समस्त समाज का उद्धार करने की शक्ति हमें प्राप्त हो, इस अभिलाषा के साथ हमारी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद सर्वेभ्य। ओम श्री बहु बहु उत्तम बहु उत्तम उत्तमं उत्तम तिलोत्तमा भगिनी, बहु बहु उत्तमं। भगिनी अति सुंदर। तिलोत्तमा जी, आपने सबके दिल की बात बोली है। धन्यवाद। बहुत सरल भाषा में और बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अति उत्तम तिलोत्तमा भगिनी, अति उत्तम। हम मराठी भाषिक है, धीरे धीरे हिंदी का प्रयास कर रहे हैं और हिंदी में जब हम उत्तम हो जाएंगे तब संस्कृत में प्रयत्न करेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। बीच में नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा आपकी बोले, हिंदी भी बहुत अच्छी बहुत है। बढ़िया बोले हिंदी। हमारे पिताजी को हिंदी बहुत पसंद है, वो प्योर उत्तर हिंदुस्तानी जो हिंदी है उसमें बात करते हैं और उन्होंने एक कादम्बरी बोलते हुए नॉवेल, वो भी हिंदी में लिखा है।
वो मराठी में भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, लेकिन उनके जैसी प्रतिभा तो प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन उनके मन में जो है वो पूरा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि पिताजी को जो जो अच्छा लगता है वो हम कर सके और उनकी अच्छी कन्या बन सके, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बढ़िया प्रयास। आपकी बहुत ध्वनि उत्तम, बहुत बहुत उत्तम। सुंदर है, आपके पढ़ने का तरीका भी इतना अच्छा है, वो भी हमें पिताजी ने ही बचपन में ही सिखाया था। और सुनने को मन लगता है भगिनी। हमारे दादाजी और सच में। हमारे पिताजी दोनों भी हमारे लिए बहुत कार्यरत रहते थे, उन्हें अच्छा लगता था। हम बचपन से ही जो भी कुछ काम हो उसमें इंटरेस्ट लेते थे और वो जो बताते थे वो करते थे, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था। हम सब भाई बहनों से वो कुछ भी जो बड़ा काम हो तो वो हमें बताते थे और हमसे पूरा करके लेते थे कि उनका हम पे विश्वास था कि ये काम पूरा करेगी। बहु तिलोत्तमा उत्तमं, भगिनी, तिलोत्तमा भगिनी, बहु उत्तमं। भवत्याः कथनशैली बहु उत्तमम् अस्ति। धन्यवाद। आज शीला भगिनी बोल रही थी, उन्होंने मेरी मुंह की बात छीन ली। सेम थिंग आई वांटेड टू टेल तिलोत्तमा। धन्यवाद। You can repeat it, भगिनी। Yeah, your voice is so sweet. I will tell in different language. Your voice is very sweet. First of all, it मनोहर है, और आपका पंक्चुएशन जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल मन में बैठ जाता है सुन के। ये सब आपका बड़प्पन है। बहु उत्तमम्। इदानीं कमल भगिनी स्वविचारं प्रकटयति। आम गुरुवर्य आम। ओम। मैं तिलोत्तमा भगिनी जैसे तो बोल नहीं सकती है, फिर भी थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करेगी। ओम परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वामीवर्य नमः, सर्वेभ्यः नमः। अभी अथ अष्टादशोऽध्याय भावकथनम् अस्ति। मोक्ष संन्यास योगो नाम में ये अध्याय में मोक्ष के लिए, संन्यास के लिए, त्याग के लिए भगवान बताते हैं। 16वें अध्याय में भगवान दैवी और आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन करते हैं। उसको लेकर अर्जुन ने 17वें अध्याय के आरंभ में निष्ठा के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन किया। 18वें अध्याय में अर्जुन निष्ठाओं के तत्व को अलग अलग स्पष्ट जानने के लिए उसकी जिज्ञासा प्रकट करते हैं, क्योंकि उसके मन में बहुत व्याकुलता है। उसको ये समझता नहीं है कि संन्यास क्या है, त्याग क्या है, मोक्ष क्या है। तो अर्जुन बोलते हैं, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वं मिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। महाभाव संबोधन का प्रयोग करने का भाव यह है कि आप संपूर्ण विषयों को कहने में समर्थ है। ऋषि के शब्द संबोधन अंतर्यामी का वाचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ। केशि निषूदन विघ्नों को दूर करने वाला सूचक है। पहले भगवान संन्यास और त्याग के बारे में सब उसको स्पष्ट बताते हैं। किसी भी कर्म के साथ कर्तापन का भाव न रहना, ये पहले मैं आपको संन्यास का बताती है। बुद्धि का कहीं भी लिप्त न होना, राग रहित, अनहमवादी, धैर्य उत्साह से युक्त तथा सिद्धि असिद्धि में निर्विकार होना, सात्विकी बुद्धि वाला, वैराग्यवान, एकांत का सेवन करने वाला, इंद्रियों का नियमन करने वाला, शरीर वाणी और मन को संयत करने वाला, कर्तृत्व अभिमान और राग द्वेष से रहित होकर काम करना, संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक परमात्मा तत्व को देखना,
परमात्मा तत्व में प्रविष्ट होना। त्याग के लिए कहते हैं कर्म फल का त्यागी होना, कर्म और फल के आसक्ति का त्याग करना, अकुशल कर्म से द्वेष न करना, कुशल कर्म में आसक्त न होना, कर्तृत्व मात्र हमेशा करते रहना, परमात्मा तत्व में स्थित होना। संन्यास में कहते हैं परमात्मा तत्व में प्रविष्ट होना, और त्याग में करते हैं परमात्मा तत्व में स्थित होना। कर्म और फल की आसक्ति को छोड़ने का नाम ही त्याग है। प्रकृति की चीज सर्वथा प्रकृति में देना, विवेक द्वारा प्रकृति से संबंध विच्छेद करना, इसका नाम है संन्यास। भगवान बोलते हैं मेरा निश्चित मत सुनो, यज्ञ दान तपस् इति एतत् कर्म त्रयम् न सर्वथा वर्जनीयम्, तत् अवश्यम कर्तव्यम यत् तत् त्रिविधम कर्म मनीषाणां शुद्धि कर्म अस्ति। त्यागस्य विषय वदति एतानि कर्माणि अहमेव करोमि इति असंगेन बुद्धि विना फलापेक्षा च विना कर्तव्यानि इति यत् निर्णीयते तदेव मम परमं मतम इति जानीहि। फिर भगवान त्याग के विषय में तीन विविधा बात बताते हुए बताते हैं कि राजस सात्विक अलग अलग के त्याग है। तामस त्याग से गुण क्या है? निश्चित और काम्य कर्मों को स्वरूप से त्याग करना उचित है, परंतु नित्य कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। मोह और अज्ञान के कारण उसका त्याग करना तामस त्याग है। राजस त्याग के लक्षण बताते हैं जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूपी है। ऐसा समझकर यदि कोई शरीर के क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वो राजस त्याग है। राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पा सकता। सात्विक त्याग के लक्षण में बताते हैं हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसीलिए उसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग करना शक्य नहीं है। इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही सच्चा त्यागी है। कर्म फल का त्याग करने वाला न हो तो कर्मों का अच्छा बुरा और दोनों मिलाकर फल में 3 प्रकार के फल मरने के पश्चात मिलता है। कर्म फल का त्याग करने वाले को कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं मिलता। हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु है। अधिष्ठान मीन जिसके आश्रय से कर्म करते हैं। कर्ता कर्म के सिद्धि में हेतु बनता है। अविवेकी पुरुष जब प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपनी मान लेता है तब वह कर्ता बन जाता है। करण जिन इंद्रियों व साधन के द्वारा कर्म करते हैं उसका नाम करण है। कुल 13 करण है। 5 कर्म इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों, वो बाह्य इंद्रियों है। मन बुद्धि अहंकार अंतरकरण है। चेष्टा क्रियाओं की अलग अलग चेष्टा होती है, वो कर्म सिद्धि के लिए होती है। 5वें हेतु का नाम है दैव। यहाँ दैव नाम संस्कारों का है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही संस्कार अंतकरण में होते हैं। मनुष्य के अंतकरण में शुभ और अशुभ जैसे संस्कार होते हैं, उनके अनुसार करने के विचार होते हैं। इन 5 के होने से ही कर्म सिद्धि होती है। जीव का संबंध परमात्मा के साथ है, पर वह अहंकार के साथ संबंध जोड़कर अपने को कर्ता मान लेता है। संग, दैवम, शास्त्र और विचार, इन तीनों से अच्छे या बुरे संस्कारों को बल मिलता है, जिससे नए कर्म होते हैं। सुमति कुमति सबके उर्रहीन, जैसे विचार होएंगे वैसा ही कर्म होता है।
मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके लिए ये पांचों कारण है। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी है। यहाँ भगवान आत्म्यास कर्ता समझने वाले की निंदा करते हैं। अभी अर्जुन को भगवान समझाते हैं, भगवान कर्तृत्व अभिमान रहित कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जिसकी बुद्धि संसारी पदार्थों और कर्मों में लिप्त नहीं है, वह पुरुष इन सब लोगों को सबको मारकर भी वास्तव में न तो मारता है न पाप से बनता है। जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है, स्वार्थ रहित है, संसार के हित के लिए संपूर्ण क्रियाओं करता है, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा हुई भी तो वास्तव में वो हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ, अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्व अभिमान से किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है। इसीलिए वह पुरुष पाप से नहीं बनता। अभी भगवान कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह बताते हैं। कर्म प्रेरणा 3 प्रकार की है। ज्ञाता जो जानने वाला है, ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए, यह जानने में आने वाली वस्तु का नाम है। कर्ता, करण तथा क्रिया, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह है। अभी भगवान ज्ञान, कर्म और कर्ता ये 3 प्रकार के भेद बताते हैं। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के हैं। ज्ञान राजस, सात्विक और तामस होता है। सात्विक कर्म के गुण है न्यतम संगरहितम राग द्वेष कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विक मुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ, कर्तापन के अभिमान से रहित तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के धैर्य उत्साह से युक्त कार्य के सिद्ध होने और न सिद्ध होने में हर्ष और शोक न करने का क्या है, वो सात्विक कहा जाता है। तामस ज्ञान त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मेमां जहि न जातः प्राग भूतोद्य देह तत्व न नक्ष्यसि। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी बोले हैं, हे राजन, तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे, यह बात नहीं है। तामस ज्ञान में आसुरी संपत्ति विशेष है। तामस मनुष्य के बुद्धि को पशु बुद्धि कहा गया है। एक ही शरीर में संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है। इस 5 भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। तामस मनुष्य की मान्यता युक्ति और शास्त्र प्रमाण से विरुद्ध होती है, जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है। राजस ज्ञान, जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, वह राजस ज्ञान को ही राजस ज्ञान समझते हैं। सात्विक ज्ञान, जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग सब भूतों में एक ही विनाशी परमात्मा को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को ही अर्जुन सात्विक ज्ञान समझो। अभी 21 से 27वें श्लोक का अर्थ है, कर्ता का भाव नहीं रखना, अहंकार मैं करता हूँ भाव अभिमान रहित कर्म करना, अहंकार का भाव नहीं रखना, विचारों से रहित कर्म का फल का त्याग करना, राग द्वेष रहित सब कर्म करना, सर्वथा सबके हित के लिए कर्म करना। ओम कृष्णार्पणमस्तु। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। अभी मैं ये बताना चाहती हूँ गुरुवर, कल गुरुवर का उपदेश था, जिस हृदय में भगवान का स्मरण होता है उसमें पीड़ा नहीं होती। पीड़ा का अनुभव और भगवान का स्मरण दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक मन में दो ज्ञान एक समय नहीं रहते। जब भगवान का स्मरण होता है तब सारे दुख मिट जाते हैं, परंतु जब दुख का स्मरण होता है तब भगवान का विस्मरण हो जाता है। इसके विषय में एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि मैं 78 ईयर्स की हूँ। लास्ट ईयर मुझे कोविड 4th टाइम हुआ जब मैं क्लिनिक में फिर से गई। उसके बाद से मेरे को बहुत जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग होने लगी, बहुत पीड़ा रहती है, कभी कभी ज्यादा देरी बैठ नहीं सकती है। मैं प्रभु से कहती हूँ, प्रभु तू मुझ में बैठा है, ये पीड़ा मुझे नहीं होती, ये तो आपको होती है। मुझे ये देख के बहुत दुख होता है, मेरे से सहन नहीं होता कि आपको इतनी पीड़ा होती है। आपकी पीड़ा कम कीजिए, जैसे मैं दुख नहीं कर सकूं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सच में वो पीड़ा कम हो जाती है और मैं भगवान की आरती कर सकती हूँ। ओम तत्सत। धन्यवादो गुरुवर्य, स्वामी वर्य, सर्वेभ्य। मेरे बोलने में बहुत त्रुटि होगी, मुझे माफ कीजिए। धन्यवाद है। बहुत बहुत अच्छा है। आखिरी में जो आपने कहा ना, वही वस्तुतः भाव कथन है। सत्यम वास्तविक सत्यम। विचार को आपने में जो प्रकट किया, आपके बहुत सोच के लिए कोटि कोटि प्रणाम। ज्योति बहुत भगनी अच्छा। बहुत आप धन्यवाद। सबकी बहुत प्रेरणाएं हैं, सबसे वयोवृद्ध है। आप प्रेरणादायी है सभी के लिए। हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। एक्सीलेंट कमल भगिनी, एक्सीलेंट कमल भगिनी। धन्यवादाः धन्यवाद कमल सब। भगिनी, यही उनका धन्यवादाः। त्याग है। Today you inspired my life and hats off to you. धन्यवाद धन्यवाद यही- सर्वे धन्यवाद। मेरे भगिनी पति जो कमल, बगल में बैठ के सुनते रहते हैं भाव कथन, वो भी इससे सहमत है कि आप यू आर रियली ग्रेट भगिनी, कमला भगिनी। धन्यवाद। यही पूर्णाद्वैत है। उत्तमम। हाँ धन्यवाद कमला भगिनी। धन्यवाद कमला सर्वे धन्यवाद। कमला भगिनी, अभी आपने हाँ। जो बताया वही पूर्णाद्वैत है। मैं और मेरा भगवान एक ही है और वो मेरे हृदयस्थ है, तो मुझे जो होगा वो भगवान को होगा। मैं भगवान का गुणगान करूंगी, भगवान के गुणगान करेंगे। मी और तू का जो भेद अभी आपने मिटाया है वही पूर्णाद्वैत है, और वही हम जिस तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं, पूर्णवाद तत्व ज्ञान का, उसका पूर्णाद्वैत मतितार्थ है। हाँ धन्यवाद भगिनी, धन्यवाद। अग्रे गच्छामः। अग्रे ज्योति भगिनी स्वविचारं प्रकटयति। जैसे तिलोत्तमा भगिनी ने बोला था, मराठी भाषिक है और हिंदी से वो ग्रेजुएट होगी संस्कृत में। मैं तो कन्नड़ भाषिक हूँ, संस्कृत तो बहुत दूर है, हिंदी भी अच्छी तरह से बोल नहीं सकती हूँ, इसलिए आई स्विच टू इंग्लिश। महोदया क्षम्यताम। मैं कोशिश कर रही हूँ संस्कृत में कुछ लिखूं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। भगवान मुझे प्रेरणा दे कि आई विल ट्राई टू राइट इन संस्कृत। फॉर राइटिंग दिस ऑल्सो आई वाज एक्चुअली 2 दिन से मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने देन सोचा आप प्रेरणा दे तो मैं कुछ लिख सकती हूँ, कुछ आप मुझे रास्ता दिखाइए तो कुछ लिख पाई। वो ठीक है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन जब मैं पढ़ रही थी जो जो मुझे सूझा, जो जो मुझे दिखा, उस सबको मैं क्रोडीकरण करके कुछ लिखी हूँ अंग्रेजी में। ज्योति भगिनी डोंट वरी, मैं भी महाराष्ट्रियन है, मेरे को भी हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती है, फिर भी मैं बोल देती है। I'm with you, Bhagini, Jyoti Bhagini. I'm from AP. अस्तु संस्कृत और महोदय, आरंभं करोमि। बहुत दूर है। श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कृष्ण परमात्मने नमः, नमः सर्वेभ्यः। अष्टाध्यायी भगवत गीता is divided into 3 parts.
by the Vidvajana based on Tattvam Asi Mahavakyam. First 6 adhyayas reflect Tvam, the Atma Chaitanya. From 7th to 12th chapters are about Tat, dealing with Parabrahma, including Prakriti and Acharanas. The last 6 chapters depict Jiva Brahma Aikyam, which will lead to moksha. Moksha could be Svalokya, Samipya, Swarupya, Sayujya, or Kaivalya, depending on the Sanchita Punya Karmas or the Phalas, Punya Phalas, as judged or as decided by Paramatma. Chapter 2 is like an elaborate prospectus where Bhagavan Krishna gives a detailed account of what to expect during the Gita Bodhanam. And chapter 18 is the Sara Sarvasva, or the summary in retrospect. It sums up all the divine words of Bhagavan that Bhagavan spoke through Maharshi Vedavyasa, Krishna Dvaipayana, though. Krishna spoke with love, care, and concern to Arjuna, representing all the mortals in the world, to clear the darkness or ignorance through this divine Jnanamaya Pradipa. He is trying to enlighten all our darkened minds. While chapter 2 may be described as a philosophical summary, chapter 18 may well be referred to as practical instruction manual. This makes chapter 18 one of the most useful for seekers. It is the Gita in overview. Beginning from childhood, we are all taught, and we continue to teach our children, that happiness is the measure of how successful we are in whatever we do. Maybe a good meal, a good weather, meeting friends, obtaining good grades in school, earning handsome salary, looking good-looking spouse, posh lifestyle, etc., etc. And the list is unending. And success is primarily defined in terms of material prosperity, namely money, wealth, power, status, career achievements, etc. At some point in the journey of life, even if you manage to be reasonably successful, happiness and peace of mind remains elusive. And even if we have achieved a good number of goals, we find that goals are only being continuously replaced by newer ones. And I need not reiterate this because Acharya Mahodaya has explained this trait time and again in our classes. This is when the question arises as to whether this mundane existence, this endless running around and the rat race is all worth it. We then start seeking spiritual solutions, begin looking towards yoga, meditation techniques, visiting temples, seeking spiritual advice, searching for gurus, trying to understand God, going to different spiritual organizations, etc. for help. Even though all of it may be somewhat helpful, even give a temporary peace of mind, the fundamental problem remains. I'm sure every one of us have experienced this and continue to be so. As Sanatanis, we are fortunate and we must feel blessed that we have our life guide in Bhagavad Gita that Maharshi Vedavyasa has crafted, and it's a masterpiece in spiritual literature that throws light upon many issues that bother the mankind. After going through or taught by Adarniya Guruji, who taught us with devotion, love and care in detail, step by step, I wonder if we are left with anything to say, or if anything is wanting. Well, but we have to do our duty now, Bhavakathanam. This concluding chapter is called Moksha Sannyasa Yoga. Sannyasa is an important and integral part of Hindu asceticism and a concept that is generally understood as giving up of worldly life. Those who practice it are variously known as Munis, Sadhus, Babas, Swamis, Yogis, Jnanis, Avadutas, Paramahamsas, Jangamas, Rishis, Gurus, so many names, but they are rather titles or designations which are given to them according to their monastic discipline, methods of spiritual practice, degrees of progress, or state of self-realization. However, they all fall under the common term sannyasi, which means the one who takes up sannyasa or renunciation.
They are one of the commonest features of Hindu social life, revered and worshipped by common people for respect and admiration they command for their self-sacrifice, spiritual powers, and esteemed place in Hindu spiritualism. Therefore, even at the end of first chapter, we saw Arjuna dropped his bow and arrow, and he even said, life of sannyasa is better. And then because of some punyam, he surrendered to Lord Krishna and asked for teaching. Otherwise, probably like any of one of us mere mortals, Arjuna also would have done this, ran away from the battlefield. But because of some punyam, he sought Krishna's help, hoping that Krishna will prescribe sannyasa. Arjuna wanted sannyasa and he was waiting for Krishna to endorse sannyasa. And Arjuna was smart, but Krishna was smarter. Therefore, Krishna gave a new definition to sannyasa, which is totally different from traditional conventional definition. What is the conventional definition of sannyasa? A monastic life in which a person gives up everything, leaves home, snaps ties with everyone and everything. This monastic life is the conventional sannyasa, and it is talked about in scriptures, and it is an elaborate ritualistic procedure. Even taking up sannyasa involves a lot of rituals, and it is called ashrama sannyasa. However, it should not, it did not end up like that. So coming back to sannyasa that Arjuna wanted so that he can get out of the war. Because sannyasi should not fight, he thought sannyasa is better. But what does Krishna do? Instead of giving this traditional conventional definition, Krishna gives a new definition, and that definition is what it is karma yoga. He says karma yoga is real sannyasa. Thus, karma yoga way of life followed by a grihastha is sannyasa. We all know karma means action, yoga means state or the means. Karma yoga refers to the spiritual practice in which the actions are used by God's devotees as means to achieve self-transformation and liberation by escaping from the consequences of their actions. The karma yoga suggests the way to live in this world without getting our hands dirty with sinful actions. The essential doctrine of karma yoga is explained in several Upanishads and is extracted in Bhagavad Gita also, because Bhagavad Gita is Upanishad Saram itself. In other scriptures, let us see. Chittasya shuddhaye karma natu vastu upalabdaye vastu siddhir vicharena na kinchit karma kotibihi. Karma is intended for purification of mind and not for understanding the nature of an object. Knowledge can be obtained only by reflection. Not even a little bit of it can be known by performing even a crore of karmas. This is Bhagavan Adi Shankaracharya's Viveka Chudamani's 11th verse. Now, karma yoga and Zen also. There are certain Zen practices which are similar to karma yoga. Karma yoga also has many similarities with Zen practice of soji or Buddhist practice of doing daily chores to train the mind. Such practices involve doing whatever physical work that has been assigned to a monk, such as sweeping the floor, cleaning the utensils with mindfulness, concentration, and without expectations and distractions. Soji is karma yoga in action, except that we do not offer that work as a sacrifice to God or perform it as a part of God's duty. This approach to work is based upon a simple principle of total and unconditional involvement. When you are doing something, do something. When you sit, you sit. When you eat, you eat. When you sleep, you sleep. It is the essence of mindfulness and living with the right awareness. You engage in actions to tame your monkey mind and allow it to become absorbed in that moment of action without any expectation of appreciation, recognition, or approval. The idea is same. You engage in actions as part of your self-cleansing or transformation, not to feed your ego or strengthen your identity or distinction. ये बोलते हुए मेरा मन का मन की जो what I'm thinking is, whatever I'm reading, I'm not concentrating. I'm thinking what people who are listening are thinking about my presentation. So I also have to now train
When I'm reading, I have to read. I should not think. Sorry to interrupt. That is how mind works. Kshamyata Mahodaya. Karma yoga as a way of life. Karma yoga goes beyond simple daily chores and extends to the whole life. It is meant not only for spiritual aspirants, but also for worldly people to whom work is the way of life and who have to deal with tougher challenges and greater distractions as they are engaged in the act of living. Karma yoga, or path of action, as suggested in the Bhagavad Gita, teaches people how to cope with pains and pleasures of life without choosing or without escaping. It teaches people how to remain engaged with the process of living, however difficult, distasteful the circumstances may be. This is in stark contrast to the popular opinion that men should renounce these worldly things, go to a forest or some secluded place away from society like a cave and perform tapas or meditation in order to achieve self-realization. Unlike Buddhism, Hinduism is not a monastic religion. It does not prepare people for rigors of monastic life, but for the difficulties and uncertainties of mortal life. There are several references to Karma Yoga in Bhagavad Gita. There is one whole chapter on Karma Yoga itself. So according to Bhagavad Gita, selfish actions are according to Bhagavad Gita, selfish actions or desire-ridden men bind to their consequences and subject them to cycle of births and deaths. At the same time, one cannot escape from karma by shunning their responsibilities altogether. Inaction or non-action is a solution to the problem of karma. Liberation cannot be attained by abstaining from work or by renouncing work, because it is not possible for anyone to remain inactive even for a moment. There are several, I think I will skip all these things. There are several shlokas or verses in chapter 3, chapter 4, where it talks about the karma, how to do karma, how desire is the external enemy of wise on earth, which the desire is insatiable, it dilutes soul by overpowering senses, the mind, intellect, etc. All of this Acharya Mahodaya has taught us in detail. So though I have written, I thought I'll skip for saving time. Now I'll just directly go to, of course, I want to tell one verse where God is a perfect karma yogi. There is no better example than him in performing selfless action. Although there is nothing in the three worlds for him to do or attain, still he engages in action. He not only creates the worlds and beings, but also supports them by ensuring that they are in order, regularity, and continuously. Though he is unborn and eternal, he incarnates on earth to restore order and balance whenever disorder or confusion becomes excessive. He does this to protect the pious and destroy the wicked, and set an example so that people upon the earth would emulate him. That is that paritranaya sadhunam, vinashaya cha dushkritam, dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. So God is the perfect karma yogi, as I told earlier. He keeps coming back in the Manava Vesha or Manava Avatara to protect us. So that is the karma he is doing, and he is setting an example so that the world is kept in order, is free from disorder and confusion. The fourfold orders in the society was also created by God again out of no desire but to establish order in the world. The ancient seers knew that actions would not taint God, as he had no desire for fruits of action. Thus, by knowledge, they attained perfection. Ignorant people engage in actions with selfish motives, with attachment, while the wise ones perform them without attachment for general welfare of the world. In Hindu way of life, sannyasa and tyaga are commonly used words. Both sannyasa and tyaga
convey similar meanings, which is to give up or renounce. Out of these two words, sannyasa is often heard or spoken about. If one gives up a particular type of activity or work, it is said to be sannyasa. Like we say he has taken sannyasa from a particular activity. Like for example, we say he has taken sannyasa from politics. He has taken sannyasa from playing cricket. A person who wears saffron clothes and does not take part in worldly activities, leaves his household, retires either to a solitary place or joins a spiritual or religious organization on permanent basis for self-realization, he is also called sannyasi. Here, the person completely cuts off his family ties and moves away from his social life for God realization and to work for the welfare of humankind. Tyag also means to give up, but it connotes a number of other activities. Commonly, tyag means doing all actions which are prescribed as per the scriptures without showing any concern for fruit of actions. What it implies is that while tyaga is an inner attitude, sannyasa is more an outer activity. Major difference between sannyasa and tyaga is that while sannyasa is based on one decision to change the course of life from worldly to a life of monk, tyaga requires plenty of effort to stay in the world and perform all activities righteously without any selfish motive or in a spirit of renunciation. The ultimate aim of sannyasi or tyagi is to live a life based on higher consciousness for God realization. The attitude of a tyagi is to stay in the world but do not belong to the world. That is to stay in the world in a spirit of detachment without being attached to any object of the world, his family members, the possession like house, money, and so on. A tyagi works selflessly without desires. He considers his duty to work in the world without any attachment. He undertakes work without showing any preference for agreeable works or showing aversion to disagreeable works. Sannyasa and Tyaga in Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, Sannyasa and Tyaga have similar meanings, which is to perform your duties selflessly. The Gita says that he is a sannyasi as well as a Tyagi who performs his duties without bothering about the result, that is, phalapeksha or fruit of actions. In Gita, sannyasi is equated to yoga. Gita wants everyone, including sannyasi, to stay in the world for self-evolution and live in the world without being affected by worldly attractions. Live in the world like a lotus in water, unaffected by water, which means to work without attachment and resigning all actions to the Supreme. In the last chapter of Bhagavad Gita, Arjuna asked Lord Krishna to explain the difference between sannyasa and tyaga. Lord Krishna replies that works like yagna, tapa, and dan should always be performed because these purify the wise. But these works should be performed in a spirit of dedication for the benefit of mankind without any selfish interest. It already indicates that both sannyasa and tyaga are inner attitudes which have got nothing to do with abandoning of works. Renunciation of fruit of action is highly praised in Gita, that is karma phala tyaga. Renunciation of fruits of action is equivalent to renunciation of desires. That is karma phala tyaga buddhi is equal to vishaya tyaga. Both sannyasi and tyagi are to perform dedicated service-oriented actions. This requires fixing up a goal or ideal of life, which could be knowing your inner self. Higher the goal, higher is your level of energy and higher would be your level of perfection. Follow the teaching of Katha Upanishad, which says, arise, awake, and stop not till the goal is reached. In other words, both sannyasa and tyaga would convey the meaning of a dynamic action done selflessly. When you do not bother about results of your actions, you fully concentrate on the work in hand, and whatever the result comes, you are least concerned as you have put your best in the work, and this is the inner attitude towards work. Tyaga is giving up. Now I remember a story.
I mean, I remember certain examples. This part of India, in southern India, I don't know about Uttar Bharat. This part of Bharat, there is a belief that when you visit Kashi, you must give up something like some vegetables, some fruit, some sweets, etc. So people who go there give up the vegetable that they don't like or they hate, like for example, Karela, which they don't like, and maybe sweet, a peta, because peta is not available in this part of India. And the fruit, maybe like some fruit that is not available here, maybe some exotic fruit, I say I will give up. So they will come and say, I've given up this sweet in Kashi, this vegetable in Kashi, this fruit in Kashi, so I'm not eating. What they have done, they have not done any tyaga, they have done some cheating. They think that by doing all these things, they are doing both Swamikarya and Swakarya. They are actually relinquishing something in the name of tyaga, but they are also safe that they can eat whatever they like. This is not called tyaga. Tyaga is to give up the means of giving up negatives, desires, ego, attachment to your possessions. It would mean that you must be aware of your own self, your negativities and positive qualities. Then you must understand and practice higher values of life, which are moral values, spiritual values, and social values. As these values enter into you, the negativity within loses its grip on you and finally fades away. Next, we come to our desires. Desires are a big motivating factor in our undertakings. Desires are not to be suppressed, but upgraded to noble desires like to serve others, share your values with others, and care for others, and to raise our state of consciousness to a higher state. Here I remember I have a small garden. This time we got a bounty of good mangoes. We have 3-4 trees in our premises. So whenever somebody comes, I give this naturally ripened, fresh, good mangoes that I have grown with my own hands. And I see people eat and feel very happy and say, "Bahut badhiya, bahut sweet, bahut acha." I feel very happy. I mean, that gives so much happiness and satisfaction that I should not keep it for only myself. I should refrigerate and sell and make money. That kind of thought is not there. I'm not telling I'm a big tyagi, but I'm just giving an example how much happiness you get by giving away or giving up certain things. Now, Bhagavan Shankaracharya has said in Viveka Chudamani, it is better to do selfish work than to do nothing, since there are better chances for a selfish worker to become dedicated worker and to work selflessly for the benefit of others than a person who does not work and sits as an idle man. Ego is feeding of I-ness and minus. Ego also means that I'm superior than others and I'm separate and not a part of the mainstream. Ego also means identifying yourself with the body and not Atma inside you. An egoistic person must understand that the power of energy in him belongs to the soul inside him, which is a fragment of God. He must surrender his sense of kartritvam, doership, to God and become a part of the mainstream as the same soul resides in all. These are elevated souls who manifest the power of God inside them and use it in their conduct and dealings. The soul inside a man has inherent qualities of truth, knowledge, and bliss. Lastly, we come to the attachment to our possession, including our family members. Attachment makes us selfish and we develop feeling of dislike for others with whom we are not attached. There is no harm in having our possessions, but these should be held with a detached outlook on life. A detached person does not cling to his possessions as he has love for all. Now, renouncement and joy. When you get attached to God or higher values of life, your negativity gets into background, becomes weak, since you have raised your consciousness to a higher degree of existence. This further means that you automatically go to let go of your lower inside you.
let go of your lower inside you. And since you are not an ignorant person now, you enjoy the beauty with a detached mind without deadening the senses. We have senses, we enjoy senses, but at the same time, we have a detached mind, so we can enjoy life. A beautiful thing must be appreciated as beauty is God's creation. Lord Krishna says in Gita that whatever is glorious, beautiful, powerful, know that it has come from a fraction of my splendor. So that we must always understand and appreciate. As per Bhagavad Gita, Tyag and Sannyasa is a mental attitude where you neither hate or desire anything and remain free from pairs of opposite, dvandva. You are away from all these dvandvas, opposites like pleasure and pain, likes and dislikes. All actions done without attachment enforce real Tyag and renunciation. When you offer or renounce your actions to God, it also means that divine will operate in your actions, speech, thoughts, as your personal will shall merge into the divine will. Kurvan yeveha karmani jijiveshachatam samaha evam tvayi nanya te tosti na karma lipyate nare. This is the second shloka of Ishavasya Upanishad, which means always performing karma here. One should desire to live for 100 years. So long as you seek to live as human being, no other path exists where activity does not taint you. Again from Sannyasa Suktam, from Mahanarayana Upanishad, na karmana na prajaya dhanena tyage naike amritatvamanshuhu parena nakam nihitam guhayam vibrajate tadyatayo vishantihi. Not by work, not by progeny, not by wealth, but by renunciation alone have some attained immortality. That which is even beyond heaven is attained by these self-controlled sannyasis as shining self in your heart. Na karmana, not by karma, because karma will bring karma phala, and karma is finite. Karma phala is also finite. So, can karma yoga lead to moksha? Yes. We can gain knowledge by karma yoga. Karma yoga is not a set of actions. Karma yoga is converting our activities in life into a means of our growth. Example, duties in marriage, parenting, etc. Na prajaya, not by progeny. Na dhanena, not by wealth. We always desire to attain chaturvida purusharthas, that is dharma by punya karma, artha is dhana, kama is by progeny. So moksha has to be chosen and strived. It does not come without persistent involvement. Tyage naike amritatvamanashuhu. Only by tyaga, renunciation of karma, can we gain moksha. Not doing karma is not renunciation. Even while doing karma, you should discover that you are actionless. That is a karma. You can gain moksha only by knowing that Atman is a kartru and that it is Brahman. Parena nakam, limitless sukham. Akam na vidyate yasmin tad nakam. Nakam is swargam. Even in our Kannada we say naka is swarga. Nihitam gruhaya. Nihitam guhaya. Guha is buddhi. God dwells in our buddhi. Guha. Guha also stands for darkness. We do not recognize the Lord who is Ananda Swarupa due to our ignorance. Yet vibrajate, that which shines in the form of Ananda, is living in our guha, buddhi guha. Tad yatayo vishantihi. Yati is yatnashila. Even karma yogi is a yati. Yatis are mumukshus and sannyasis. They attain moksha. So this verse from Sannyasa Suktam from Mahanarayana Upanishad sums up that not by work, not by progeny, not by wealth, but by renunciation alone, we can attain moksha or immortality. Even in
in our Dasa Sampradaya, there is one, again from Purandara Das, there is a kriti called Ille Vaikunta Kaniro. Ille Vaikunta Kaniro, Siri Vallabha Nangriya Nere Nambidavarige. One, Ille Vaikunta means Vaikunta yahi hai, isi dhatti pe hai. Siri Vallabha Nangriya Nere Nambidavarige. Siri Vallabha is Shri Krishna or Vishnu, Angriya Nambidavarige. Whoever unko charan mein संपूर्णता भाव से who believes in Vishnu, for him Vaikunta is here only. Nudi erada agade, kadu kopa madade, badatana bandaru lekkisade, bedagu hennugala kannolage ಕಡೆಗಣ್ಣಳು ನೋಡದೆ ದೃಢಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಂಬಿದವರಿಗೆ. ನುಡಿ ಎರಡಾಗದೆ, ವಿತೌಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ जो अनृत न बोलते हैं, कड़ु कोप माडदे, जो कोप नहीं करते हैं, बड़तन बंदरू लेखिसदे, even in poverty who don't count about that, ಬೆಡಗು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಕಡೆಗಣ್ಣಳು ನೋಡದೆ, who does not अन्य स्त्रियों को I mean those who do not eye ಪರನಾರಿ ದೃಢಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ವೈಕುಂಠ ಕಾಣಿರು. पक्षपातविಲ್ಲದನ್ನ ದಾನಗಳು, जो पक्षपात के बिना अन्न दान करते हैं, ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮಾಡದೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮೋಕ್ಷವ ಬಯಸುತ್ತ ಅನ್ಯಾಯವಳಿಯುತ, जो अपेक्षा के बिना गुरु सज्जनों की सेवा करते हैं, so for them the Vaikuntha is here only. ಪರಹಿತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳ ಅರವಟಿಗೆಯ ಸಾಲು ಮರವ ಹಾಕಿ, जो परहित के लिए कुआ तालाब होते हैं, अरवटिगे means in here in Karnataka there is a practice where people set up water stations on the roads where they serve water, buttermilk during summer for people. तो पथिक जो होते हैं उनके सेवा के लिए जो सेटअप करते हैं उसको अरवटिगे बोलते हैं. तो अरवटिಗೆಯ ಸಾಲು ಮರವ ಹಾಕಿ, the avenues, the trees that are we have one famous lady, Salumardha Timmaka. So we have trees lined up on both sides of the road for the shade of the Padikas. So people who do that kind of work, for them the Vaikuntha is here on this earth. ಸಿರಿಪುರದರಸು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ಸ್ಮರಿಸಿತಲಿ ಹರಿಗೆ. स्थिर चित्त से लगातार जो हरिस्मरण करते हैं उनके लिए वैकुंठ यहीं पर है, इस धरती पर ही है. ये तो सारांश हो गया इस दास पद का. तो बहुत ज्यादा बोल दिया, कुछ कोहेरेंट था नहीं था मुझे मालूम नहीं, क्षम्यतां. अहम विरमामि. ओम तत्सत्. धन्यवादः महोदय. Jyoti Bhagini, last section was too good. Very beautifully explained, and you possess it's a perfect amalgamation of knowledge and feelings and above all the practical ability to bring the concepts of Srimad Bhagavad Gita into realized form. I am delighted. Words are too weak for me to express my feeling. Bhavatah pravachanam nata vyakyanam ativa uttamam asti. Adyatanam vyakyanam shrutva ananditah. No doubt about it. Thanks a lot. Dhanyawada Guruji. But I must admit that not every word is mine. God has given me some strength to look for information here and there and compile it and maybe edit in a way that we can understand. Dhanyawada Guruji. No, but everyone does the similar way. You know, you are not special into it. Everyone is doing the same way, the way you are doing. But the way you have compiled the things in a realized form, that is something which is very remarkable, and I appreciate that from the deep core of my heart. Dhanyawada Swamiji. Very nice, Jyoti Bhagini. The last part was too good. Dhanyawada Bhagini. Jyoti Bhagini, you have analyzed it very scientifically and very clearly and put forward excellent and made it very
simple for us. Thank you so much. Like Kamal Bhagini told, when I got up yesterday morning, I was not in a proper mood to do work. I am also 63 years, not a young girl. And we live in a village. Now I don't have a maid also, and I have a garden, house to maintain, puja, part, and this cooking, cleaning, everything. I was very laid back yesterday. I don't know, but I mean, I was not getting a mindset to do properly until last evening, maybe around 4:30. I said, enough is enough. You have a duty on your hand. You have to do it. So I sat down and tried to read and understand and do something. Then I think I wrote up to 1 in the night, in between taking breaks for household work. But I said, Paramatma, you have to show me the way. And when I was searching, I was getting thoughts and I was getting information, and I knew how to combine. I mean, he showed me the way. So that is all Krishna Arpana or Bhagavad Arpanam. That's it. यही सात्विक भाव है. ಜ್ಯೋತಿ ಭಗಿನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್. ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಓದ್ದೇ ಇರೋರ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದು ಒಂಥರ ಸುಲಭ ಆಗೋಯ್ತು. Actually, see, I have lived in this kind of mindset for many years. Actually, समय है महोदय? जी. Actually, my husband is a chartered accountant, and he has his friend for many years, like maybe 50 years friend, who is at a very young age. He became a chartered accountant, cost accountant, company secretary. He was a ranker through and through, and his wife also an accomplished person. But both of them, they were living in Chennai. And one day when they were cleaning their house, the bookshelf, they caught hold of on Ramana Maharshi's work, or maybe his biography, I don't know, but something to do with Ramana Maharshi. They got so inspired, and overnight he sat and read the book and gave it to his wife. So both of them renounced everything and they gave up. They sold their house. They sold only car they kept because they wanted to move around, and they have now become ascetics actually in real sense. So whenever they have visited my family, my mother-in-law has fed them many times, and they're very close friends. So once when he came, he was wearing one loincloth and one angavastram. So my mother-in-law asked, and he had left that beard and chata and all that. So my mother-in-law told in Kannada, if I say, yakaya idella nindu idu avaste, ee tara avatara yake, you can still have a clean shave, cut your beard, be presentable, wear proper clothes, but all these thoughts are there in your mind, not in your physical appearance. Then he did namaskara to my mother-in-law. He said, okay, from next time when I come, I'll be a normal gopi who I was when I used to visit you earlier. So they both changed, transformed. Slowly that transformation came, and whenever we used to have any doubts, we used to sit and do spiritual deliberations in our own way, sit through the night. Whenever they visited, both husband, they both, Dampati and we both will sit and discuss. My husband will make tea in between and give us. So that question of what I am, who I am, what I have to do is always there in my mind. So I may not have a proper structural training, but seeing people around now, especially my mother-in-law actually, she was a very practical person coming from a very traditional family where even her mother used to do Sandhya Vandana. She is from such family, but she was such a practical person, and she has, seeing her, I have inculcated a lot of values in my life. If at all, I-ness should not be there, but it has percolated in my mind. As I'm telling, I'm remembering her and very thankful to her. Astu Mahodaya. धन्यवादः. बहु उत्तमम्. Jyoti Bhagini, I don't know how to express it. Like I was thinking that truly Bhagini is a scientist
You know, I mean, the way you have put things together, it's very beautiful. And thank you so much. And a small request, somehow, you know, जैसे आप बता रहे थे, your friends are there. Ekdam, you know, I'm so excited to meet them. I don't know. They There live is in this Canada, Bhagini. They have an ashram in there is a deep Tiruvannamalai. They have an anxiety. ashram in Tiruvannamalai, but they live Yeah. in Canada, so they come here during winter. Yeah, there is a deep anguish, you know. I say, you Yeah. know, there's something happening within me that I have to meet them. And you know, you know, if possible, you can put me on a Zoom call. We can just meet. I'll be so happy. I will call them Right. and find out. They Sure. have their worldly And yeah, any engagements also. They have that spiritual guru in Edmond, in Canada. So I'll they have connect. shifted there. I'll connect with you, Bagini. After the this one, I'll connect with you. हाँ, And any spiritual ते बहन talk. तुमच्या पार्सल आलं असेल. Any spiritual talk, please include me. This is a request to everybody. Beach midnight also, like if you call me, like we can talk about it. I'll be like very delighted. So thank you so much, Bagini. Thank you so much. ಧನ್ಯವಾದ. ಜ್ಯೋತಿ ಭಗಿನಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ, ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆ ತರನೇ ಅವರು ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲೈನ್ अगर कोई खाना बचता है जिसे हाउस हेल्प के लिए देना है तो वो ऐसे ही नहीं देती थी, उसको गर्म करके जैसे हम खाते हैं वैसे ही उनको खिलाती थी. अगर जो कपड़ा दान में देना है, जो यूज किया हुआ भी हो, तो उसको धो के प्रेस करके देती थी. और इवन फॉर चिल्ड्रन, नो, she used to do anything with lot of love. For grandchildren, my children were brought up by her. So of course one son has married an American Jewish girl, but my mother-in-law always used to say that our children cannot become bad because उनका परवरिश ही ऐसा नहीं हुआ, उनके मन में कुछ गलत सोच विचार आए. These days, actually I used to be like that. Then I had become very practical. I had detached completely from any spiritual thoughts and become very materialistic, confused. But slowly I'm getting back to that. No, I'm very happy. Actually, we had lost one very important document. Then it was actually misplaced by my husband. Then we shifted from city to this village also. We were not able to find it in both houses. We were really worried, but it was very important. It meant a lot for us in this materialistic world. But I lost my dhairya. The moment I knew, somebody told it is very important and losing that might really cost you something. So that statement by a lawyer made me very disturbed. I was very disturbed. But I said, no, this is a materialistic thing. And then if it is written in your destiny that you get it, if it is not written in your destiny, then make an alternate method to retrieve that document at a cost, at some effort. It's okay. So that dhairyam came because I'm sitting in a Bhagavad Gita class. And my husband, without attending any classes, generally he's Sthita Prajna. Generally he's like that. So he also gave me courage. And last night when I was doing my write-up, he found it. He found the document. We were so thrilled. We were so relieved. So everything, you just leave it to God. If we deserve something, he will give it to us. If we don't deserve, so be it. We'll find an alternate. He'll only show alternate way. So that dhairya has come to me at this stage of my life. So how I wish I had this kind of courage during my youth. Maybe my life would have been different. Hari Om. ಹಾ ಭಗಿನಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Uttamam Bhagini. See, there is so much to learn from everybody's life. There is so much to learn. We have to keep our eyes open and have a mindset to absorb whatever message God sends through such things. So
That is the thing. That's what I keep doing. Thank you for sharing all this. Very true. Very true. True what you said. Mahodaya. धन्यवादः। जी जी। भाव कथन के लिए रूपल भगिनी, कुलकर्णी महोदय, शैला भगिनी, अंगद महोदय, प्रमोद महोदय, आशा भगिनी, अनीशा भगिनी, इन लोगों का बाकी है। तो आप लोग भी करना चाहेंगे तो कल के लिए भी भाव कथन रख लेते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोगों का भी होना चाहिए क्या? रखेंगे महोदया, रखेंगे महोदया। For one day itself we have to struggle so much, but every day you do this. We don't know how much pain you take to prepare all this. Each one's voice is different, each one's experience is different, but the topic is the same. It is very inspiring. Whenever, every day when we get up with this positive mindset, we feel so blessed. Thank you so much, Mahodaya. शीला भगिनी सत्यम उक्तवती। सत्यमेव। धन्यवाद। सत्यम। अपने पुण्य पुंज उदय होता है तब ईश्वर की प्रेरणा से सब चीजें स्वतः स्फुरित होती हैं। उसमें कोई कारण माध्यम बन जाता है, वो अलग बात है। बाकी ये सब अपने ही पुण्य के प्रभाव है। I mean, कारण भाग्य बोल रहे थे ना, तो सेम थॉट केम टू मी लास्ट नाइट। सो आई वाज आस्किंग माय हस्बैंड, मैं इधर कैसे आ गई, संस्कृत कैसे सीखने लगी। हमारे घर के पास एक संस्कृत संभाषण कक्षा होता था, तब तक मैं थोड़ा बहुत समझती थी, लेकिन स्ट्रक्चर्स नो, व्याकरण एंड ऑल, इवन नाउ आई कांट। दैट इज व्हाई आई डू इन इंग्लिश। बट फ्रॉम दैट 10-day संभाषण कक्षा, she directed me to a class in Ragi, near there is a temple called Ragigudda in Bangalore. There they were conducting some classes through Sanskrit Bharati. So I just attended that class for 1 month. So he said there is one diploma course happening from Tirupati University. So I took up that, of course, without any background, without any foundation. I just took that. I struggled to complete. Somehow I completed. I got, I got through. I mean, on paper, but I cannot say I know Sanskrit properly. Then from then onwards, from that Tirupati group, we came in contact with you, Guru Mahodaya, Acharya. So that is the journey. How the destiny takes you from where to where is what I was wondering yesterday. Astu Mahodaya. तो फिर कल भी भाव कथन ही रहेगा। क्षम्यता, आज मैं बहुत ज्यादा टाइम ले ली, ऐसे में मुझे महसूस हो रहा है। नहीं, ठीक है। पूरे विचार अच्छी तरह से आने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया आपने। धन्यवाद। कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा। तो एक बातें और कहनी थी मुझे। अभी गुरु पूर्णिमा से 29 सितंबर तक चातुर्मास्य है सन्यासियों के लिए, विशेष करके एक जगह रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं। प्रमुखतः हम लोग चूंकि शांकर पीठों से जुड़े हुए हैं, और विशेष करके हमारा तो यहाँ पर पूरी पीठ जो गोवर्धन मठ है वहां से दीक्षित है, दीक्षा लिए हैं, इसलिए वहां चातुर्मास्य के अवसर पर पिछले वर्ष से हम लोग वहां जो आने वाले मठ में साधु सन्यासी और अन्य सामान्य गृहस्थ लोग हैं, तो वहां रुकते हैं, और जो स्वाध्याय इत्यादि होता है, चाहे ब्रह्मसूत्र का हो, श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य हो, अथवा उपनिषद से संबंधित चर्चाएं हो, तो वो कक्षाएं होती है। श्रीमद् भागवत की कक्षा भी होती है, ऐसे 4 कक्षाएं, 4 से 5 कक्षाएं प्रतिदिन संचालित होती हैं। वहां लोग आते हैं, रहते हैं,
भोजन प्रसाद इत्यादि ग्रहण करते हैं, तो हम लोगों ने पिछले वर्ष से अपने क्षेत्र के लोगों ने, हमारे गांव के नहीं, क्योंकि गांव में तो उतने लोग हैं नहीं दीक्षित, तो जो दीक्षित शिष्य हैं अथवा जो सनातनी विचारधारा के हैं, उनसे आग्रह करके हम लोगों ने अन्न दान का एक प्रकल्प चलाया, अन्न वहां ले जा करके दान करना। तो अभी इसी प्रकल्प में हम लोगों ने सोचा, पिछले वर्ष कुछ कम हुआ था तो इस बार थोड़ा सा अधिक करने का। तो यहाँ से एक क्षेत्र में जो हमारे गुरु भाई हैं कहा जाए, उन लोगों के सहयोग से एक अच्छा अन्नदान जा रहा है। तो उसमें उसके अंतर्गत 25 किलो से लेकर के 25 के गुणात्मक में 25 किलो अथवा 50 किलो या 75 किलो या 100 किलो के आसपास इस तरह से अन्नदान एकत्रित किया जा रहा है। तो उसको सब एकत्रित करके हम लोग वहाँ गोवर्धन मठ में भेजने की व्यवस्था करेंगे। इसी तरह से आप लोग भी अपने आसपास के क्षेत्रों में ही, क्योंकि अन्नदान इस समय पर करना चाहिए, तो जो भी पीठ से आप निकट हैं, जिस पीठ के जहाँ पर अथवा स्वाध्याय इत्यादि होता है, वहां पर ये अन्नदान अथवा अन्नदान के निमित्त यथाशक्ति उसके बदले, क्योंकि यदि अन्न प्रत्यक्षतः पहुंचाने में सक्षम नहीं है तो धन इत्यादि की व्यवस्था करके आप लोग वहां पहुंचाइए, ये एक निवेदन था। बस इतना ही। आज की कक्षा